Hello everyone, this is Dr. Anjali Srivastava, retired zoology professor, and this is my YouTube channel, Adarsh Alia. I'm again here with my today's topic is disorders related with female reproductive hormonal imbalance. The last in the series of the female reproductive system, its anatomy, uh, ovary, its histology, the physiological role of the female reproductive hormones, and the last one today is the disorders related with female reproductive hormonal imbalance. Hope पहले के दो वीडियोस आपके लिए काफी हेल्पफुल हुए होंगे. एक्चुअली अभी तो मैं उन्हीं टॉपिक्स पर जा रही हूँ जो एमएससी सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स ने मांगा है, और ये वीडियोस थोड़े लंबे भी हो रहे हैं क्योंकि मैं एमएससी के सिलेबस के हिसाब से पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस में लिटरेचर भी उनको साथ साथ दे रही हूँ, एंड आई एम ट्राइंग टू गिव देम ऑल द पॉइंट्स टू बी डिस्कस्ड. टुडेज टॉपिक इज वेरी इंटरेस्टिंग. आज का जो टॉपिक है जिसमें खास तौर से ये जो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज या पीसीओडी है, इसके बारे में तो आप लोगों ने बहुत सुना होगा. और ये टॉपिक मैं सोचती हूँ कि एक तो मैं आपके एमएससी के सिलेबस के हिसाब से बना रही हूँ, ज़ूलॉजी क्लासेस में डालूंगी, पर प्ले लिस्ट में एक जनरल अवेयरनेस के लिए शॉर्ट वीडियो पीसीओडी पे मैं अलग से जरूर डालूंगी. ऑफ कोर्स ये कुछ समय लेगा बिकॉज फ्रॉम टुमारो आई विल बी फॉर 3-4 days आई विल बी on traveling. So let us come to the main topic, disorders related with female reproductive hormonal imbalance. So students, फीमेल में सेक्स रिलेटेड या रिप्रोडक्टिव हेल्थ रिलेटेड बहुत सारे कंसर्न्स हैं. अगर हम जनरल देखें तो दीज आर सर्टेन इम्पॉर्टेंट health disorders or health concerns for women are endometriosis, uterine fibroids, gynecological cancer, HIV and AIDS, interstitial cystitis, sexual transmitted diseases, and polycystic ovarian syndrome PCOS, जिस पर आज हम कंसंट्रेट करने जा रहे हैं बिकॉज दिस जो सिलेबस हम फॉलो कर रहे हैं उसमें हार्मोनल इम्बैलेंस रादर ये भी एक वजह है कि उस सिलेबस में अलग से मेंशन किया हुआ है. और हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से जो सबसे ज्यादा कॉमन पूरे वर्ल्ड में वुमेन में रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर है, दैट इज द पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसऑर्डर PCOD or polycystic ovarian. This is also called as PCOS, polycystic ovarian syndrome. It is also called as PCOD, polycystic ovarian disorder. So we are going to concentrate over this disease or this disorder and its allied irregularities. Mentioned specifically two disorders किया हुआ है, hyperandrogenism and hirsutism, but some more related parts are to be seen जब हम PCOS देखेंगे तो PCOS से related और बहुत सारे हार्मोनल इम्बैलेंस रिलेटेड डिजीजेस हैं, दैट इज कार्डियोवास्कुलर डिजीज, इंसुलिन हाइपर इंसुलिनेमिया resulting into the cholesterol rise, then that in turn causes the heart diseases, kidney diseases. So altogether we are going to emphasize on this PCOD or PCOS different facts. As I've already told, it is a very long chapter. You are looking here 36 slides हैं. ये आपके slides वाइज तो हम बिल्कुल ही नहीं डिस्कस करने जा रहे हैं. This PowerPoint presentation will definitely help you covering all the aspects. जिसमें बहुत सारे aspects ऐसे भी हैं जिनको आप omit कर सकती हैं, जैसे gene descriptions हैं, biochemical explanations of hyperandrogenism है, तो वो सारा आप पर डिपेंड करता है. मैंने अपनी तरफ से एक अच्छा नोट के लिए आपको लिटरेचर भी प्रोवाइड करा दिया. नाउ इन द स्लाइड्स वी आर गोइंग टू डिस्कस PCOD in under these headings, that is introduction, sign and symptoms, pathogenicity, reasons and hormonal pathway, normal versus PCOS condition,
associated disorders, then tests. What are the tests required to detect, to diagnose? That is diagnosis, tests and diagnosis हम एक साथ भी रख सकते हैं कि किस तरह से क्या क्या टेस्ट किए जाते हैं, कैसे ट्रीटमेंट किया जाता है, और जीन्स एंड जेनेटिक फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल. दिस इज ऑलरेडी आई हैव गिवन. मैं सिर्फ इंट्रोडक्टरी पार्ट जब मैं बता रही हूँ पीसीओएस क्या है तो मैंने मेंशन कर दिया. डिटेल्स अगर आपको चाहिए तो आप लास्ट के 2 स्लाइड से ले सकती हैं. एंड सम एथिकल डूज एंड डोंट्स फॉर दिस disease. So students, before we go into the what is PCOS, let us compile my wordings. मैं PCOS है क्या, मैं बहुत शॉर्ट में आपको बताती हूँ. और ये एक जनरल अवेयरनेस के लिए भी, एज आई हैव टोल्ड यू, वुमेन वर्ल्ड वाइड, वुमेन में ये डिसऑर्डर बहुत ज्यादा, हर 5-10 वुमेन के बीच में भी एक अब वुमेन पाई जा सकती है सफरिंग फ्रॉम दिस डिसऑर्डर. This disorder is not a disease, so don't get afraid when you listen about that you are suffering from PCOS or PCOD. कोई डरने की बात नहीं है. ऑफ कोर्स आपको अलर्ट हो जाने की बात है. और एक और बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट इज दैट जैसे जैसे समय बढ़ रहा है, जैसे जैसे मॉडर्नाइजेशन बढ़ रहा है, लाइफस्टाइल्स बदल रहे हैं, कंप्यूटराइज्ड डिजिटलाइजेशन बढ़ रहा है, दिस डिसऑर्डर इज इंक्रीजिंग अमंग women, क्योंकि बहुत इसके बहुत सारे फैक्टर्स में रिस्पॉन्सिबल हैं इस डिसऑर्डर के, दैट वी विल सी. जिसमें एक फैक्टर है जब जो हम नेचुरल अपने लाइफस्टाइल को छोड़ते जा रहे हैं और मॉडर्नाइज्ड लाइफस्टाइल को अपनाते जा रहे हैं, जिसमें कि इनएक्टिविटी बढ़ती जा रही है. और बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है इसका ये कि जहां से हम इवोल्यूशन होकर के, इवॉल्व होकर के आए हैं, चिंपैंजीज एंड एप्स, हमारे जो एंसेस्टर थे, वो जब जो लाइफ वो बिताते थे जंगलों में, वही जीन सब में आया हुआ है. और वो जीन हाइपर एक्टिव लाइफ उनका बीतता था. वो कंटिन्यूअस फूड एंड शेल्टर के लिए एक्टिव रहते थे. और वही चीजें अब घटती चली जा रही हैं. तो हमारा जीन हमें प्रेरित करता है, मोटिवेट करता है कि एक्टिव होइए, हमेशा एक्टिव होइए. और हमारा मॉडर्नाइजेशन हमें खींचता जा रहा है, सुस्त बनाता जा रहा है. तो ये बहुत बड़ा रीजन है हमारे आज पीसीओडी या पीसीओएस की कंडीशंस को जो राइज पे हैं. उसके लिए आपको अपने आप को दोष देने की कोई जरूरत नहीं है. लाइफस्टाइल हो गया है, हार्मोनल डिसबैलेंस इसकी वजह से होने लगा है. सो साइंटिफिकली वी विल सी what are the causes that is increasing this disease. और ये disease actually, ये disorder है क्या? This is the disorder actually. अगर हम introductory part देखें तो this is the disorder that causes due to the combined inaction or improper action of anterior pituitary as well as adrenal glands that in female cause the production of male hormones. जो androgen आप हम लोग देख करके आ रहे हैं, एक मेल हार्मोन है जो टेस्टोस्टेरोन को की सिक्रीशन को बढ़ा देता है और फीमेल में फीमेल हार्मोन्स के सिक्रीशन को सप्रेस कर देता है ड्यू टू वेरियस रीजंस दैट वी विल see now, and that starts resulting into prolonged reproductive cycles. जो menstrual cycle या pregnancy के cycles होते हैं, उनको या तो धीरे धीरे ये हार्मोनल इम्बैलेंस उनको कम करने लगता है, प्रोलॉन्ग करने लगता है, और धीरे धीरे बिल्कुल स्टॉप कर देता है. जैसे 12 साल के 12 महीने में 12 साइकिल्स अपीयर होने चाहिए. पीसीओएस के पेशेंट्स को यूजुअली ये प्रोलॉन्ग्ड साइकिल से शुरू होता है. जब बिगिन होता है तो कभी 8, 9, 10 इस तरह से कम होने लगते हैं साइक्लिक पीरियड. और अगर इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट, प्रॉपर ध्यान नहीं दिया गया, प्रॉपर ट्रीटमेंट मेजर्स नहीं अपनाए गए, तो दैट मे रिजल्ट इनटू एमोनेरिक कंडीशन, दैट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल बिल्कुल स्टॉप हो सकता है या बहुत प्रोलॉन्ग, पहले तो प्रोलॉन्ग होता है, धीरे धीरे ये स्टॉप कर सकता है. और इसके साथ ही अगर एक फीमेल में मेल हार्मोन्स का लेवल राइज करेगा तो एसोसिएटेड बहुत सारे डिसऑर्डर्स, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस राइज करते हैं, जिनमें बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट एक तो हो गया हाइपरएंड्रोजेनिज्म, दैट इज मेनली कॉजिंग a number of associated problems. जिसमें एक है हर्सुटिज्म, दैट इज डेवलपमेंट ऑफ
hairs over the body, neck पे, face पे, अंडर आर्म्स पे, टोज पे, मेल रीजन, मेल में जहाँ जहाँ आर्म हेयर्स ग्रो होते हैं उन रिलेटेड जगहों पर हेयर ग्रो करने लगता है। एफएसएच के सिक्रेशन अफेक्टेड होता है तो बोन्स एंड मसल्स में थिननेस आने लगती है। एक्यूट कंडीशंस में हेयर में बालनेस, मेल की तरह बालनेस अपीयर होने लगता है, that is called as alopecia. Then are the insulin related. सबसे ज़्यादा important, another very important disorder is type 2 diabetes, जिसमें इंसुलिन hyperactive होने लगता है और fatigueness that starts causing fatigueness, deposition of adipose tissue that results into the obesity. So let us see one by one. These are the pathogenic effects or the side effects of the flow chart. This is a flow chart of the consequences, possible consequences and outcomes of PCOS. These are the associated problems or the symptoms: infertility, pelvic pain, excessive hair of growth based on face, chest, stomach, thumbs and toes. This is called as hirsutism, baldness or alopecia, acne, oil skin, dandruff. ये सारी चीजें बहुत डेवलप होने लगती हैं. Patches of thick and dark brown or black skin, then hyperandrogenism. So this is the flow chart in two ways. How what are the possible consequences of PCOS, and this is the hypothalamus. किस तरह से हाइपोथैलेमस के कंट्रोल में ये हमने देखा है, एंड दिस आई विल एक्सप्लेन, आई ट्राई टू एक्सप्लेन यू इन शॉर्ट इन सेपरेट स्लाइड. नॉर्मल कंडीशंस हम देख करके आ रहे हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल का. जब उसमें इम्बैलेंस आता है हार्मोनल कंडीशंस में, मेंस्ट्रुअल साइकिल कैसे इम्बैलेंस होना शुरू होता है और कैसे साइड इफेक्ट्स दिखाई देने होते हैं, ये यू कैन गो थ्रू दिस फ्लो चार्ट. You can understand this flow chart once we will see the normal conditions of hormones regulating the menstrual cycle. That is the most important reproductive cycle of female, and PCOS condition or the polycystic ovary syndrome conditions. After that, उसके बाद मैं scroll down करती जाऊंगी slides को, कुछ important points होंगे तो we will see, and I hope this will help you. So let us start with the normal conditions of, यहाँ पे हम देखें, normally हमने देखा menstrual cycle के different changes we have gone through. That is the GnRH is secreted from the hypothalamus in brain. GnRH anterior pituitary पर काम करता है, and very एकदम बहुत ही short में हम इसको describe करेंगे. Anterior pituitary LH and FSH secrete करता है. Two hormones, female reproductive hormones, ये काम करते हैं follicles पे. Developing primordial follicles में से कुछ follicles change होने लगते हैं. Folliculogenesis या oogenesis शुरू होता है. Follicle develop करते हैं primary, secondary and tertiary में. ये developing follicles, they start producing estrogen, another hormone. This hormone when produced sufficiently, exerts negative effect on LH, whereas GnRH is exerting positive effect on LH and FSH. तो ये हम पिछले स्लाइड में सब देख चुके हैं कि किस तरह से FSH ड्रॉप डाउन होता है और LH स्टेडी लेवल पर रहता है up to 10 days, and suddenly this LH level rises and it brings about the ovulation. If you remember the last class, ovulation होता है, ovum release होता है, ovum release होने के बाद फॉलिकल कन्वर्ट कर जाता है कॉर्पस ल्यूटियम में. कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट करता है. प्रोजेस्टेरॉन के सिक्रीशन से GnRH का प्रोडक्शन नेगेटिव हो जाता है. इसको ये स्टॉप करता है ताकि आगे साइकिल कंप्लीट होने तक, ल्यूटियल फेज कंप्लीट होने तक फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन को स्टॉप किया जा सके. और अगर प्रेगनेंसी नहीं होती है तो प्रोजेस्टेरॉन धीरे धीरे डिक्रीज करने लगता है. कॉर्पस ल्यूटियम रीजनरेट करने लगता है, कॉर्पस अल्बिकन्स में बदल जाता है, और कॉर्पस ल्यूटियम का सिक्रेशन जब कम होने लगता है तो नेचुरली GnRH स्टिमुलेशन ब्रेन इंक्रीज करता है और द साइकिल गोज ऑन.
menstrual cycle. So this is in the normal condition. Now, how it is affected in PCOS condition, that we will see. What happens here again, the condition starts with the GnRH. Just try to understand, because in the advanced slides, everything in very much details I have given. तो यहाँ पे आप सिर्फ एक बार समझ लेने की कोशिश कीजिए कि PCOS में ये जो हार्मोनल बैलेंस का कंडीशन हमने देखा कि एक साइकिल कंटिन्यू होता रहता है, दैट साइकिल इज हियर अगेन, इट शुड बी हैपन, बट वो इम्बैलेंस कैसे होता है, रिजल्टिंग इनटू PCS. So this is the GnRH secreted from the brain, that is gonadotropic hormone. It acts on anterior pituitary. Anterior pituitary stimulates or releases the LH and FSH that reach the ovarian follicles. Now, in case of PCOS, that is the Polycystic Ovarian Syndrome or disorder, the disorder or the disbalance starts from here. LH and FSH, if you remember, they act together. LH steadiness पर आ जाता है, LH का secretion steady होने लगता है, FSH का secretion down होने लगता है, कुछ ovarian follicle advance होने के बाद estrogen का secretion होता है. यहाँ पर अगर PCOS condition है तो ये एस्ट्रोजन का सिक्रीशन या प्रोलॉन्ग्ड हो जाता है या स्टॉप हो जाता है. हियर once the follicles they reach the secondary or tertiary follicular condition, they should start estrogen in normal conditions. This estrogen puts negative effect on LH. LH का production कम होना चाहिए, तो folliculogenesis बढ़ता है under the control of FSH in normal condition. But if LH is not suppressed, LH का secretion को imbalance की वजह से, that may be the reason. अब यहाँ पे मुर्गी पहले की अंडा पहले वाला condition question है. However, the condition is estrogen का production अगर नहीं होता है, estrogen का control नहीं होता है, production sufficient नहीं होता है, stimulation sufficient नहीं होता है, तो secondary sexual characters का development पहले तो affected होता है, तो प्यूबर्टी अफेक्टेड होती है, दूसरा प्रोलॉन्ग साइकिल्स प्रोलॉन्ग्ड हो जाता है, ओव्यूलेशन में डिले हो जाता है या स्टॉप हो जाता है. दीज आर ऑल ड्यू टू इंक्रीज्ड LH लेवल. ये नेगेटिव इफेक्ट को नहीं होने देता है. एस्ट्रोजन नहीं हुआ तो LH पर नेगेटिव इफेक्ट जो होना चाहिए था वो नहीं होता है. LH का नेगेटिव इफेक्ट नहीं होता है तो FSH का प्रोडक्शन होता चला जाता है. तो इफ यू रिमेम्बर, नॉर्मल साइकिल में क्या होता है, जब कुछ फॉलिकल्स ग्रो कर जाते हैं तो उनका ग्रोइंग फॉलिकल्स का नंबर कम होता जाता है, एंड सडनली आफ्टर 10th डे सडनली देयर इज राइज ड्यू टू द एस्ट्रोजन लेवल. पॉजिटिव इफेक्ट होता है LH का, सडन स्पाइक आता है LH में, एंड दैट कॉजेज द ओव्यूलेशन. दैट स्पाइक ऑफ LH इज वेरी मच एसेंशियल फॉर द ओव्यूलेशन. ओव्यूलेशन के लिए लास्ट क्लास में हमने देखा था, बिल्कुल सडन राइज 14th डे पे हुआ था और तब ये नीचे आने लगता है, जो चार्ट में हमने देखा था. तो ये जो स्पाइक है, ये जो पीक पे पहुंचता है प्रोडक्शन 14th डे पे, दिस कॉजेज द ओव्यूलेशन, और उसके बाद कॉर्पस ल्यूटियम बनेगा. बट इफ देयर इज हार्मोनल डिसबैलेंस, LH का प्रोडक्शन जो जहां कम होना चाहिए वहां कम नहीं हुआ, एक्सेस प्रोडक्शन होता रहता है, तो वो FSH के फंक्शनिंग को इफेक्ट करता है, ओजेनेसिस को इफेक्ट करता है, प्रॉपर फॉलिकुलर डेवलपमेंट नहीं होता है, और फॉलिकुलर डेवलपमेंट नहीं होता है तो एस्ट्रोजन का इफेक्ट एस्ट्रोजन का प्रोडक्शन पर बहुत एडवर्स इफेक्ट पड़ता है. सो दिस इज द फर्स्ट स्टेज जहां पर हार्मोनल इम्प्रॉपर बैलेंस शुरू होता है. तो उस एस्ट्रोजन नहीं हुआ, कम है, ओव्यूलेशन अफेक्टेड हुआ, ओव्यूलेशन नहीं हुआ तो कॉर्पस ल्यूटियम नहीं बना या बहुत देर से बना. इट इज वेरी एविडेंट, ओव्यूलेशन से डायरेक्टली रिलेटेड है कॉर्पस ल्यूटियम का बनना. अगर बहुत देर से बना तो भी नॉर्मल साइक्लिक इफेक्ट इम्बैलेंस होगा,
नहीं बना तो कार्पस ल्यूटियम नहीं बना तो what will be the next effect? Progesterone will not be formed, will not be stimulated. Progesterone is a very important female hormone जो ओव्यूलेशन के बाद की सारी एक्टिविटीज, अगर फर्टिलाइजेशन होता है तब भी, नहीं होता है तब भी, जो ल्यूटियल फेज जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, जो हमने ग्राफ देखा था, दिस ल्यूटियल फेज दिस इज, ये 15 डेज है, यहाँ पर LH बना और नीचे आने लगता है, LH के नीचे आने के साथ GnRH का लेवल ड्रॉप होता है, फिर धीरे से बढ़ेगा, एंड FSH का लेवल अगेन इट इज अंडर, this is the normal cycle of menstrual cycle. If it is not under control, तो प्रोजेस्टेरॉन जब बनता है तो प्रोजेस्टेरॉन GnRH पर नेगेटिव इफेक्ट डालता है. इफ यू रिमेम्बर, ये GnRH के प्रोडक्शन को रोकता है, so that the luteal phase properly comfortably proceed हो सके, और मेंस्ट्रुअल साइकिल ओवेरियन एंडोमेट्रियम को में जो चेंजेस हैं वो प्रोजेस्टेरॉन लाता है. अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो प्रोजेस्टेरॉन का स्टिमुलेशन कंटिन्यूड रहता है और वो एंडोमेट्रियम में इम्प्लांटेशन को करता है. अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल लो होने लगता है, एंडोमेट्रियम को मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है यूट्रस के लिए, तो हेवी फ्लो के रूप में म्यूकस, ब्लड वेसल्स, एंडोमेट्रियल लेयर सारे मेंस्ट्रुएशन के रूप में बाहर आते हैं. अगर हार्मोनल इम्बैलेंस हुआ, प्रोजेस्टेरॉन या नहीं है, या बहुत कम है, या बहुत देर से होता है, तो दैट इज गोइंग टू एडवर्सली अफेक्ट द GnRH. GnRH का प्रोडक्शन पर नहीं बंद होगा, दैट इज इट विल कंटिन्यू. सो यू कैन वेल इमेजिन, अगर कंटिन्यू होता है तो FSH एंड LH दोनों में कोई भी बंद नहीं होगा. सो अगर ये दोनों, जब ल्यूटियल फेज में इनका प्रोडक्शन को कंट्रोल होना बहुत जरूरी है, तभी ल्यूटियल फेज दैट इज एंडोमेट्रियल चेंजेस को मेंटेन किया जा सकता है. बट ये इनका प्रोडक्शन GnRH बंद हुआ नहीं, सिक्रीशन LH FSH का सिक्रीशन होता चला जा रहा है, LH का सैचुरेशन बढ़ता चला जा रहा है, तो FSH को LH अपने आप ही नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है, तो नॉर्मल फॉलिकुलाइजेशन, फॉलिकुलोजेनेसिस भी नहीं होता है, और इस LH के इंक्रीज की वजह से एक से ज्यादा फॉलिकल्स कंटिन्यूअसली दे टेंड टू ग्रो टू सर्टेन एक्सटेंट. और इनमें इसके साथ यहाँ पे, इफ यू रिमेम्बर, दिस इज the capsular region or the germinal layer or the epithelial layer of the ovary, जिनमें जो germinal layer हैं, they start proliferating, and this is the thecal cells, they start proliferating and secreting the androgen. If you remember the hormonal disbalance, hormonal balance हमने मेल फीमेल दोनों के हार्मोन्स के बारे में देखा था. Then I have told you कि जो एंड्रोजन है या एस्ट्रोजन है, एक्चुअली जो लेयर्स हैं, फॉलिकुलर लेयर्स, जो पहले ये थीकल लेयर्स, दे सिक्रीट एंड्रोजन, इट ट्रेवल्स थ्रू द ओवरियन वॉल, इट रीचेज द डेवलपिंग फॉलिकल्स, और यहाँ पे एस्ट्रोजन के सिक्रीशन से this androgen is converted to the estrogen with the addition of certain stradiols, steroids, और इस तरह से ये एस्ट्रोजन तब फीमेल रिलेटेड चेंजेस लाता है. पर अगर एस्ट्रोजन का कंट्रोल, एस्ट्रोजन हार्मोन का प्रोडक्शन ही इफेक्टेड हो जाता है, इम्बैलेंस हो जाता है, तो डेफिनेटली दिस एंड्रोजन secretion will continue, and this excessive amount of androgen secretion will cause hyperandrogenism. That is, androgen level will keep on increasing, resulting into a number of unwanted consequences of this in this PCOS condition. सबसे पहला चेंज होता है, ये जो एक से ज्यादा फॉलिकल्स डेवलप होने लगते हैं, तो ये फॉलिकुलोजेनेसिस को नॉर्मल प्रोसेस में डेवलप नहीं करते हैं. इनमें मेन जो चेंजेस आते हैं, ये थीकल सेल्स प्रोलिफरेट करते हैं, एंड दे स्टार्ट अ फ्लूइड फिल्ड secreting a fluid filled sac enclosing these developing follicles.
ये फॉलिकल्स, डेवलपिंग फॉलिकल्स को जो एक बार में एक मैच्योर होना चाहिए या कम से कम मैच्योर होना चाहिए, एक को ओव्यूलेट होना चाहिए, इंस्टेड a number of primordial follicles 12-15 depending upon the condition and the situation of the PCOS hormonal disbalance. These are now they appear, अगर हम आप ovary को देखिए तो you can see here, this is the condition of PCOS. This is the normal condition ovary, smooth conditioning with the developing follicles, and these are the fluid filled multiple immature follicles. ये बहुत सारे fluid filled cysts हैं. These are converted, these look like the cysts. अगर आप ओवरी को इस तरह देखिएगा तो इस तरह से पर्ल की तरह से ओवरी ये दिख रहा है, नेकलेस के पर्ल, दिस इज कॉल्ड एज द pearls of a necklace in condition दिखाई देता है ओवरी का. Numerous small collections of fluid filled and they fail to regularly release eggs. Ovulation is held over here. So this is the condition how this ovary production, ovulation is ceased, resulting into production of a number of irregularities. That is, this hyperandrogenism now, this will start affecting insulin production in pancreas. Pancreas को affect करेगा, insulin के production को enhance कर देगा. Secondarily, बिना किसी वजह के insulin जो normal production हो रहा था उससे ज़्यादा ये advanced हो गया, affecting type 2 diabetes or the gestational diabetes. It causes type 2 diabetes. एक reason ये हो गया, that causes ये insulin का overproduction. It again causes more production of androgen. Even from adrenals also, not only pituitary. We have already seen earlier also कि ovary और testis को हमेशा ही adrenal hormones भी affect करते हैं. तो यहाँ पे फिर से adrenal भी androgen के secretion को enhance करेगा, और overproduction of androgen is causing all the improper consequences in the female, that is mostly related with the male characters, but बहुत बार imbalance conditions, insulin की वजह से type 2 diabetes हो गया, then hirsutism हो गया, development of hair, unwanted hair, then acne. This acne हमेशा ही pubertal stage में appear होते हैं due to the hormonal secretions, but this acne is in very hyper situation that is called as acne vulgaris. As the name says, बहुत ही ज़्यादा तकलीफ दे हो जाते हैं, पस फिल भर जाता है, that is called as acne vulgaris. Then is the condition of baldness, alopecia, that is called as hair loss, बहुत तेजी से होने लगता है, और फीमेल में ही baldness की condition दिखाई देने लगती है. So a lot of conditions now you can see here. This is the PCOS, जिसमें बहुत सारे कुछ main concerns है. Endometrial hyperplasia ये है, this may result to the endometrial cancer event. अगर आप endometrial growth या endometrial release controlled नहीं हुआ, उसका balanced growth नहीं control हुआ, then it may result into the hyperplasia, endometrial hyperplasia, that may ultimately result into the cancer also. Then hypertension, anxiety, depression, acne, hirsutism, infertility. These are why these are happened, we have just seen. So, and this is the how the hypothalamus imbalance causes all these. Pituitary को imbalance करता है, adrenal को imbalance करता है, ovary को imbalance करता है, androgen का excess production होता है, then hyperandrogenemia और hyperandrogenism होता है, and all these together, insulin resistance खत्म हो जाता है, hyperinsulinemia हो जाता है, insulin का ओवर प्रोडक्शन होने लगता है, लिवर को इफेक्ट करता है, किडनी को इफेक्ट करता है, एंड ऑल दीज टुगेदर रिजल्ट इनटू द PCOS कंडीशन. दीज आर द functions: endothelial dysfunction, inflammatory makers, cardiopulmonary dysfunction, autonomic dysfunction of
then dyslipidemia that causes the cardiovascular problems, then metabolic syndrome. Metabolism slowed down हो जाता है, that causes the fatigueness. And that is why इस fatigueness की वजह से बहुत ही डिजीनेस आता है, डिप्रेशन आता है, बहुत सुस्ती आती है, काम करने का मन नहीं करता है, और नेचुरली काम करना कम होता है. इंसुलिन के इनएफिशिएंट इम्बैलेंस कंडीशंस में कार्ब्स जमा होने लगते हैं, एडिपोज टिश्यू जमा होने लगता है, दैट अल्टीमेटली रिजल्ट्स इनटू obesity. That is, this is the affects the stomach and ultimate result into the obesity. So these are the side side effects of PCOS or PCOD. So these are the signs and symptoms. अगर हम next point is signs and symptoms. These all we have seen. इतने तरह के the side effects or the consequences are, these are the consequences of PCOS. This is hypertension, dyslipidemia, insulin resistance, elevated estrogen, hyperglycemia, obesity, infertility, cystic ovary, secondary amenorrhea, that is the ceasing or imbalanced menstrual cycle, oligomenoria कम हो जाता है या बिल्कुल बंद हो जाता है, menstrual disturbances से शुरू होता है, hair appear होता है, hyperandrogenism होता है, acne होता है, weight gain होता है. These are the signs and symptoms. So before we proceed, ये जो diagram या ये जो slide मुझे मिला है, that is from the Armando videos. If you can go, it is probably it is a paid channel, but this person is explaining very well. बहुत ही अच्छे manner में एक दो videos मैंने देखा है, बहुत अच्छे manner से this person explains. Of course, it is the foreigner, so accent is that. So I'm trying to make you comfortable with videos which are of foreign accent. So I hope कि मेरी ये practice आपको help करेगी. So now the next is factors causing PCOS, PCOD and associated disorders. ये एक बहुत ही important चीज है जिस पे हम थोड़ा डिटेल्स तो अब हम समय नहीं है. That is genetic factors and genes. सबसे पहला factor है genetic factor. This is also as I have told you, genetic factor और genes भी responsible होते हैं PCOS conditions के लिए. खास तौर से the details of the CYP gene, these are the CYP genes are said to be causing this PCOS from generation to generation, and these are a group of series of genes जिसमें 3 important genes हैं जो cause करते हैं इस तरह के disorder को, CYP11, CYP17, CYP19. थोड़ा सा मैं और confuse हो रही हूँ, is it CYP gene or CPY genes? In the last it is given, yes, CYP genes. अब आप अगर इसका details जानना चाहते हैं तो you can go through those slides जिसमें details दिया हुआ है. Now we were talking about the factors. Then second is the environmental conditions. आपका environment भी बहुत बार affect करता है, adversely hormonal imbalance create करता है. Then physical factors, most important is obesity. Physical factors बहुत सारे हैं, but अगर हम एक in general देखें, PCOS और PCOD कोई disease नहीं है, कोई बीमारी नहीं है. बहुत सारे डॉक्टर्स का ये ओपिनियन है कि PCOS को आप कंट्रोल कर सकते हैं विदाउट एनी मेडिसिन, अगर आप अपने लाइफस्टाइल को बदल लें. दैट वी विल सी इस लाइफस्टाइल में क्या क्या चेंजेस आपको करने चाहिए. सबसे इम्पोर्टेंट चेंज है कि बहुत ही साइक्लिक रिप्रोडक्टिव साइकिल्स को मेंटेन करने के लिए आपकी लाइफ साइक्लिक टाइम टेबल वाइज होनी चाहिए. आप कितने बजे सोते हैं, कितने बजे उठते हैं, उसका एक साइकिल बनाइए. जरूरी नहीं है कि आप 8 बजे सो करके सुबह 5 बजे उठ जाएं, पर अगर आप 9 बजे सोते हैं, 10 बजे सोते हैं, तो एक हैबिट बनाइए कि कितने बजे सो रहे हैं, कितने बजे उठ रहे हैं. उठने के बाद एक्टिविटी होनी चाहिए आपकी. फैट फूड कंट्रोल इज द वेरी इंपॉर्टेंट चीज. नो शुगर एंड लो कार्ब is the most essential 2 things that are required for your habit improvement. Early onset of menstruation is another fact. बहुत सारी बच्चियों में, और इसके लिए भी एक फूड हैबिट आजकल रिस्पॉन्सिबल माना जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा
केयर करने के चक्कर में जो पहले होता था कि मेल फीमेल में डिफरेंस किया जाता था बच्चे और बेटा और बेटी में, वो जिस एक्सटेंट तक किया जाता था वो गलत है, बट उसका भी एक साइंटिफिक रीजन है, क्योंकि ओवर न्यूट्रिशियस डाइट may cause early menstruation, or early onset of menstruation may cause PCOS, that is the disturbances in the hormonal regulation. Then under and over age for gestation, जो प्रेगनेंसी का ना अंडर एज होना चाहिए ना ओवर एज होना चाहिए, ना बहुत पहले प्रेगनेंसी होनी चाहिए ना बहुत देर से प्रेगनेंसी होनी चाहिए, दैट मे कॉज पीसीओएस. देन यूज ऑफ वाल्प्रोइक एसिड, बहुत सारे डिजीजेज में वाल्प्रोइक एसिड होने वाला मेडिसिन यूज किया जाता है फॉर ट्रीटमेंट ऑफ बाइपोलर डिसऑर्डर, माइग्रेन, एपिलेप्सी, डिप्रेशन, एंजाइटी एक्सेट्रा में. तो ये एसिड का यूज से भी पीसीओएस डेवलप कर सकता है. देन fetal androgen exposure, this is not very much proved fact, established fact नहीं है, अंडर इन्वेस्टिगेशन है. fetus condition में अगर एंड्रोजन एक्सपोजर ज्यादा होता है ड्यू टू वेरियस रीजन, स्मोकिंग, अल्कोहलिज्म और अदर हार्मोन एंड्रोजन स्टिमुलेटिंग एक्सपोजर्स हो जेस्टेशन पीरियड में, तो दैट में कॉज टू, अगर वो फीमेल चाइल्ड होती है तो दैट में कॉज टू this PCOS or PCOD condition in after reaching puberty. Then these are the three facts which are related to certain morality and ethics. That is, it is also said आयुर्वेद में या नेचुरोपैथी में कहा जाता है कि PCOS या PCOD का बहुत ज्यादा कनेक्शन है मून कनेक्शन. मून के एक्सपोजर से पानी को दे एडवाइस दैट आधे घंटे से लेकर के कुछ घंटों तक पानी को मून की रोशनी में रख के उसको पीने से पीसीओएस कंट्रोल होता है. सो दीज आर द थिंग्स दैट आई हैव गॉट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द पीसीओडी एंड पीसीओएस एंड आई एम कन्वेइंग यू. ये आप मानिए ना मानिए, बट अपने आंसर में आप मेंशन तो कर ही सकती हैं. देन यूज ऑफ जीएम फूड एंड वेजिटेबल्स, जेनेटिकली मॉडिफाइड या हाइब्रिड फूड्स को नहीं यूज करना चाहिए. ऑर्गेनिकली यूज ग्रोन फूड एंड पल्सेस एंड सीरियल्स यूज कीजिए. देन यूज ऑफ प्लास्टिक्स के ज्यादा यूज से भी, माइक्रोवेव के ज्यादा यूज से भी पीसीओएस पीसीओडी कंडीशंस डेवलप करते हैं. इट इज सेड, हाउ मच established fact, it is questionable. Now, so this is the pathogenicity of PCOS. अभी हम we have just seen main pathogenic factors in PCOS. Now I think काफी लंबा हो चुका है वीडियो, तो अब हम थोड़ी तेजी से बढ़ते हैं. You can go through for the details. These are the pathogenesis of PCOS. What are the reasons? Androgenous excess होता है तो acne होता है, endometrial cancer risk बढ़ता है, alopecia, that is baldness, infertility, hirsutism, then genetic predisposition, obesity, sedentary lifestyle. Lifestyle is also very much responsible. Drugs and sedentary lifestyle जो आजकल बहुत grow करता चला जा रहा है, that is a very important reason for these PCOS that causes the insulin resistance, increased GnRH, that may result into hyperinsulinemia, that is insulin का secretion ज़्यादा बढ़ जाता है, increased lipid storage, that causes obesity, disorder of fat metabolism, then hyperandrogenism, that is increased LH-FSH ratio, LH बढ़ता है. So these are the pathogenic factors. This is again the pathogenicity. You can go through this cycle. So in this way, आपके notes के रूप के लिए these flow charts are very much, this may be helpful to you. Now these are the facts that we have just seen. You can go through for your answers. Steroidogenesis associated with the steroid production may cause PCOS in various forms that you can go. Abhi, we have just gone through these reasons and these details. You, for these details, PCOS and hyperandrogenism में क्या-क्या facts involved हैं, you can go through the literature of this hyperandrogenism. Androgen का hyper secretion PCOS को कैसे result करता है, just we have seen. These are the clinical features of hyperandrogenism. That is also the pathogenicity. Also, we have seen the manifestations. Side manifestations are weight gain, menstrual irregularities, acanthosis nigricans. This is
Another unique condition, patches on neck पर और भी कुछ जगहों पर ओवर wrinkles या पैचेस दिखने लगते हैं, दैट इज इंक्रीज्ड मेलानो पिगमेंटेशन की वजह से, मेलानिन पिगमेंटेशन के ओवर डिपोजिशन से patches of skins or the pigments are appearing. Then insulin resistance, these are the manifestations of increased androgen excess. So again, these are the factors जो हम point wise we were looking. These are the details of the associated diseases. Now this is hyperandrogenism. This is hirsutism. Hirsutism is the excessive growth. It's biochemical reasons. It's practical conditions. There are 9 points: lip, chin, chest, upper, lower back, upper and lower abdomen, and upper lower limbs. These are the 9 points जहाँ पर ग्रोथ होते हैं हेयर. अब वो 0 to 4 अगर है तो कम सीवियरनेस प्रॉब्लम का पीसीओएस का. जैसे जैसे इंक्रीज कंडीशन है, स्कोर ऑफ 8 और हायर आर रिगार्डेड एज हर्सूट. बहुत सारे फीमेल्स में मैक्सिमम नंबर में कहीं कहीं पर कभी बीच बीच में देखा जा सकता है. तो 0 to 4 कंडीशन इज नॉट हर्सूट, बट 8 और हायर कंडीशन इज हर्सूट. Then is the acne vulgaris. This is the details, किस लेवल पे acne conditions किस तरह बढ़ते जाते हैं and how they are related with the testosterone. ये बहुत सारे इरेजर कभी फंक्शनिंग बहुत डिस्टर्ब हो जा रहा है. Anyway, ये जो लाइंस दिख रहे हैं, that is due to the eraser non-functioning of the eraser. So these are some more associated pathogenic conditions or disorders related with the PCOS. Now the tests and diagnosis and treatment. These are the tests. ये सारे टेस्ट किए जाते हैं. Now again the eraser is not working, so I don't know what happened. कभी कभी इरेजर बिल्कुल काम करना बंद कर देता है. So anyway, these are just overlook this. So these are the tests that are done: blood test, glucose tolerance test, cholesterol and triglycerides, that is the lipid profile test. Then ultrasound, that is the transvaginal ultrasound किया जाता है. The additional tests are screening for depression and anxiety, screening for obstructive sleep apnea. That is, adequate sleeping is also very much required for the PCOD treatment. Now, the last but not least is the treatment. Now, the treatment of PCOS is done along the two important. This is the diagnostic. Okay. Before going into treatment, these are the tests, and after these tests, ये tests conduct करते हैं. Tests के conduction के बाद, these are certain diagnostic features, किस तरह से diagnose किया जाता है. इसके लिए these are the steps और examinations, physical pelvic examinations किए जाते हैं, physical examinations किए जाते हैं, ultrasounds किया जाता है. So these are the different measures through which the diagnosis is done. These are certain steps for diagnosis: physical examination, pelvic examination, blood tests, then additional blood tests may be there, then transvaginal ultrasound, wand-like device, a transducer is placed in vagina to observe the condition of the endometrium and the epithelial layers. This is the method of transvaginal ultrasound, extensive method. You can go through these. Then the additional tests include periodic checks of blood pressure, glucose tolerance, and cholesterol, triglycerides, screening of depression and anxiety, sleep apnea, that is the insufficient sleep है तो उसका treat किया जाता है. Now ovulation tests are under question. बहुत ज़्यादा अभी तक इसका ये नहीं है कि बिल्कुल 100% एक्यूरेट है, बट मेरी तो विचार से पीसीओएस या पीसीओडी के सिम्टम्स अगर हैं तो आप अपनी लाइफस्टाइल को सुधार के, बहुत सारे डॉक्टर्स का ये ओपिनियन है
without any medication, you can overcome this problem. And this can be done through these measures. Healthy weight before pregnancy, or it can cause infertility also. तो इसलिए प्रेगनेंसी अगर आप प्लान कर रही हो तो पहले है वेट को कंट्रोल कीजिए, ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल कीजिए, आयरन डिपोजिशन कंट्रोल कीजिए. नाउ द ट्रीटमेंट ऑप्शंस, the last point is the treatment. In treatment, during the treatment, दो मेजर पॉइंट को कंसिडर किया जाता है बाय द डॉक्टर्स. अगर आपको प्रेगनेंसी चाहिए, दैट इज पीसीओएस या पीसीओडी की कंडीशन में के बावजूद आप इफ प्रेगनेंसी इज डिजायर्ड or required, then the treatment line is somewhat different. And if no more pregnancy is required, then the treatment line is much more easier, as the use of contraceptive pills and contraceptive methods can control more easily this PCOS or PCOD condition. So if there is no pregnancy required, then you can go, you can develop the lifestyle changes. These are the changes that you must restore. You can acquire these lifestyle changes. Excessive exercise, moderate exercise होना चाहिए. As I have told you पहले भी कि हमारे जीन्स में मेहनत करना है, हम उन जीन्स को इग्नोर करने लगे हैं लग्जरियस लाइफ बिताने के चक्कर में, और वो हमारे लिए बहुत बड़ी वजह हो गया है पीसीओएस या पीसीओडी कंडीशंस को डेवलप करने के लिए. बिकॉज मेनली स्टिल अभी भी ज्यादातर रिस्पॉन्सिबिलिटी बाहर की मेल की होती है एंड हाउस होल्ड अफेयर्स की फीमेल की होती है. तो वैसे ही केसेस में पीसीओएस या पीसीओडी कंडीशन ज्यादा फीमेल में पाए जाते हैं, जहां उनकी एक्टिविटीज कम होने के चांसेस है. भले ही वो हार्मोनल डिसकंट्रोल की वजह से फैटिगनेस आ रहा है, गिडीनेस आ रहा है, आपको उसको ओवरकम करना होगा बाय following a definite predefined timetable. Lose weight, you have to lose weight, and you have to acquire these steps to improve your lifestyle modifications for beneficial for PCOS. If as I have told you, PCOS affects pregnancy, so आपको दो तरह के changes medications required हैं. अगर आपको pregnancy is not desired, there are certain therapies and medications and tablets and medicines which can be used for the treatment of the PCOS or PCOD. But if you want pregnancy, then you have to be over careful while treating yourself or one patient. You have to go through certain particular medicines like letrozole, metmorphin, and the lists are given here. I don't know what happened. कैसे इस तरह से बहुत सारे scratches आ गए हैं, and I'm not able to remove them. Eraser is not properly working, so I'm very sorry. So these are the treatment measures in both the conditions if pregnancy is required, if pregnancy is not required. Now, last but not the least, these are the genes, CYP11, 17, and 19. These are the genes that code for enzymes involved in steroid metabolism. और steroid metabolism को enhance करके, control करके PCOS को control किया जा सकता है. PCOS pathophysiology can be controlled. So with this ends today's topic. I think it has become a much longer, but because of it is a part of MSc syllabus, I think you should know all this. Definitely, I would like to create a video of 10 to 15-minute video for the general awareness. So do like, share, and subscribe the channel. Press the bell icon to get notified. Thank you. Thank you so much.